मुगलिया शासन के दौरान ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक, याद रख लें, और बहादुर शाह जफर वॉज जस्ट अ टाइटुलर एम्परर। भले बाबर हो गए, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, याद रखें हिंदुस्तान में कभी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ था। मुगलिया शासन के दौरान कभी भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। यह हिंदू मुस्लिम दंगा तब हुआ प्रदीप जी जब यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई और अंग्रेज यहां पर आए। यह अंग्रेजों ने करवाया। और 1857 में जब हिंदू मुस्लिम एकता का एक नमूना उन्होंने देखा कि आज अगर हिंदू और मुसलमान इकट्ठे हो गए तो हिंदुस्तान में तो हम रह नहीं पाएंगे, तो हर तरफ से हमला किया गया और हिंदुओं और मुसलमानों को डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी जो थी उसने जन्म दिया। दूसरी चीज, इसके पहले कि मैं माइक आपको वापस दूं, आपने बात कही रशिया की। हियर मिस्टर एस जयशंकर हैड समथिंग वेरी नाइस टू से। बहुत महीन बात कही उन्होंने। जब लोगों ने कहा कि आप रशियन ऑयल अगर खरीद रहे हैं तो इसका मतलब यू आर फंडिंग द रशियन वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। उनका हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। साहब, जो यूरोप रशियन गैस खरीदने में 1 घंटे में खर्चता है वो हिंदुस्तान का शायद महीने का भी बिल नहीं होगा। जो रशियन गैस आपको यूरोप को 1 घंटे में मिलती है, जिसका आप रशिया को पैसा देते हैं, हिंदुस्तान का वो 1 महीने का भी बिल नहीं होता है। सो हु इज फंडिंग हुम? जरा सोच के बात करिए। आप अगर करें, हा जबरदस्त, व्हाट स्ट्रेटजी, व्हाट अ लवली पॉलिसी। आवर पीपल, दैट्स राइट। हम अगर करें, ओहो, ये हिंदुस्तान ने क्या कर दिया। अरे भाई, हिंदुस्तान वही करेगा जो हिंदुस्तानियों के लिए अच्छा है। और यहां पर मुझे ये कहना पड़ेगा, जिस बात के लिए मैंने माइक आपसे लिया, नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग हुई एससीओ में, शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल में, ठीक है साहब। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा व्लादिमीर पुतिन को, विच बाय द वे वाज कोटेड बाय द फ्रेंच प्रेसिडेंट एंड द अमेरिकन प्रेसिडेंट एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्या कहा उन्होंने कि भाई आज का एरा जो है, आज का वक्त जो है वो युद्ध का नहीं है, जंग का नहीं है। व्लादिमीर पुतिन साहब, आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बट दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। नथिंग कैन बी सेटल्ड बाय फोर्स ऑफ आर्म्स। That's what Narendra Modi said. In effect, the message has gone out. We will not be bullied by anyone. किसी से हिंदुस्तान किसी के सामने झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, भले वो वेस्ट हो या रशिया हो या चाइना हो। Pradeep ji. We have to work on our self-interest, and that is what the Jaishankar External Affairs Minister said, that if you say that your self-interest is people of that particular country, you need to take care of them, then we need to take care of our self-interest. That's it. Our self-interest lies in our people. We need to take care of their self-interest. Trade and commerce is going to be decided by the people of India. The requirements of the people of India. Absolutely. The wants and demands and whatever. The people of India will decide. The country will not decide based on warfare or diplomacy. That's not going to happen. Now, India has to work on this. Now, we, as the army chief said, we are fighting a 2.5 battle. One with Pakistan, one Pakistan, one China, and half is within the country. We're the 5th column. Yes. So we are fighting a 2.5 battle, 2.5 peace battle. We're having 2.5 war fronts, half within the country and China, India, and Pakistan and China. Now, where does our self-interest lie? Now we need to find out enemies of Turkey and Pakistan. We need to find out whom they are. The war between Armenia and Azerbaijan. Even though, by the way, we have good relations with Azerbaijan too. Exactly. Here. But are we going to? Because I think the Modi government has decided to fund Armenia. No, we are not funding, sir. I must correct you. Sell. We are selling. They are selling, yes. You pay us, we'll sell it to you. We are selling armaments, yes. We are selling warfare. $250 million worth of armaments. Of the Pinaka missile system. Yes, to Armenia. Yes. Now that's it. What about the Afghan Taliban and the Pakistan Taliban? I mean, they need to work out because the Taliban's
the Pakistan Taliban, they don't recognize the Durand line. Yes. There is a problem. So we have to work on those, our self-interest, our needs. It's an absolute time for India to work on these things because this entire war between Russia and Ukraine has changed the world. Diplomatic bilaterals and diplomatic relationship, the formulas that used to be before has changed. Yes. We need to place ourselves. We need to find a new axis, as we've all been talking about, and within the country, the biggest challenge. Most important. Yes, the सबसे people बड़ा challenge तो वही है within the साहब। country. After 26/11, जी। the people believe, and the 2011 blast, which is many, the people believe that Congress cannot be trusted with fighting terror. No. Congress cannot be trusted on fighting terror because they're too much into their own business module. So people elected Modi because he can keep this country secure. Congress's Bharat Jodo Yatra, in whichever direction it is going, Congress without the Gandhis, Congress with the Gandhis. The Gandhis said we're not going to fight the elections. So they're going to have a proxy candidate out there. But whatever happens, what is good for India? That's what people of India is going to decide. And national interest is national security is the uppermost thing in every citizen's mind, especially after all these kind of skirmishes across the globe where Indians are concerned, चाहे वो Leicester में हो, Birmingham, Canada में हो, everywhere. And this is a time for India to rethink the diplomatic ways that they have been functioning. And within the country, yes, a big challenge. In every state, in Maharashtra, you find the biggest challenge. Though the BJP has worked out very smoothly its whole ideology of first destroying the second biggest party, that is the Congress, making it a sort of confusion within the rank and file of the Congress, ki what's happening with the Gandhis, without the Gandhis. Congress, Mukt Bharat, एक ideology, regional parties को बढ़ावा दो, और हमने देखा कि रीजनल पार्टीज को कैसे डिस्ट्रॉय भी करते हैं महाराष्ट्र में। तो ये एक बीजेपी का 24/7 365 days एक इलेक्शन मैकेनिज्म इज इन प्लेस, बट वी नीड टू रीथिंक आवर इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक टाइज, allies. First we had the link of US, Israel, Saudi Arabia, UAE, India, Japan and Australia. That's right. Will that link work now? I mean, there is some change where US is concerned. आपने बोला जिस प्रकार से delay in the visas, trying to 833 days, various things that hurts India the most. These countries are trying to arm twist India into submission, which I don't think Modi is. That's not going to happen. Where Jai Shankar, taking out a cue of Modi's leadership, has told the world that we are not going to succumb to any kind of pressures. That's right. We are on our own, and as always he says, and as Modi says, the people's our people's demands, our people's interests uppermost in the mind. Now when we come to all these things, where is India going from? Now if you see locally, dependence on electric vehicles, just because of Gadkari ne एक movement push कर दिया है. Now you find even BMC coming with electrical vehicles where BST is concerned. That's right. Introduction of scooters, Buses, electric vehicles. Now two-wheelers जिस प्रकार से introduce किया, that's a great thing. EVs, which are not required to be registered. not to be registered. RTO registration की जरूरत नहीं है. जी. तो India is very pushing itself out of this diesel, petrol, जो पूरे इंटरनेशनल तकलीफ जो है उससे दूर होके डायरेक्टली एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में चले आके यार. इनफैक्ट Amazon had ordered some 10 lakh electric vehicles. धीरे the entire country is shifting towards electric mode, and that's great for the country. Oh, the dependence on oil, the dependence, absolutely, and a lot of things are going to be achieved. Environment also is an issue. 33% of the environmental pollution is because of these public vehicles. Yes, emissions of the diesel and petrol vehicles, the public. So, if the entire public services comes in electric vehicle, I mean, look at what we are looking. And that calls for strong leadership. It is because you have a strong leadership at the center. The government stand, the government's thoughts, the government's ideologies percolates down to the lowest level, to the ward level.
What Mr. Modi wants, if it's a policy on oil and fuel that we are going to convert into electric vehicles, it goes down the line, Yes. right till there. And what we see is immediately after the Uddhav Sena and Fadnavis Sarkar coming, all these things are gone the fast track. Where development is concerned in Maharashtra, it's gone the fast track. Ideologies, जैसे एकनाथ शिंदे हर चीज हर स्पीच में बोलना नहीं भूलते, मोदी जी और अमित शाह के जो डेवलपमेंट एजेंडा है वो हमारा एजेंडा है. एंड सर अगर 700 डिसीजंस 2 महीने में लिया है, 702, तो वी नीड टू अपलॉड दिस, We need to applaud him. बिकॉज आप महाराष्ट्र को प्रगति पथ पर लेके गए. जी. भले हमारे उद्धव जी सब कहते हैं कि वेदांता चला गया, क्या कर रहे हो, ये पार्क चला जा रहा है, ड्रग पार्क चला जा रहा है, बट द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स, द मेट्रो itself is a huge project. No, but Vedanta, they could have also done it. They could have done it. 2.5 साल तक आप थे, तब आप एस्टैब्लिश कर लेते वहां. कुछ लेते. The very fact, the बार इन लोग सोच रहे हैं कि 2.5 साल में आपने नहीं किया कुछ भी, इसलिए सब. But apart from politics, that's one thing. The 2.5 years nothing happened. No development really took place because of various other factors also, including COVID. The whole world was suffering. The real estate went to a toss. We working on this real estate projects. Even the courts are not functioning. That's right. Because courts are not taking a stand. Usually what arbitration 1 साल में होता था वो 2 साल 3 साल हो गए, वही arbitration process चालू है. Builders पैसे नहीं देते, builders are not in a position to pay rent. Yeah, there is a problem. But how do you come out of the problem? They're solving it now. They solve. You come out of a problem by moving प्रगति पर on development. आप development agenda लेके चलोगे तो ही आप you move out of this problem. If you are staying वही आप inertia में आप खोए रहेंगे कि हम क्या करें, nothing is going to happen. You need to take a jump. You need to take a quantum jump where development is concerned. Even if it is government spending, even if the government is willing to spend. Bullet train, the government willing to spend. Metro, rail, left, right, 3, 4, 5, 6, 10 tak. Government spending. Electric vehicles, the government push. So if you at least impose the government agenda, we are through. Absolutely. That's what the whole country should talk and move in one particular direction, and that is the direction of development. And not forgetting that there is a security threat. National security is paramount along with development. और यहाँ पर प्रदीप जी एक चीज कहना बहुत जरूरी है, लोगों को याद दिलाना. सब लोगों ने पहले देख ही लिया है, लेकिन फिर भी मैं याद दिला रहा हूँ. एस जयशंकर साहब ने एक और बात कही. Yes. After his meeting with Antony Blinken, बिल्कुल. US Secretary of State, and after that he was addressing the US media. उन्होंने ये बताया, हिंदुस्तान, India that is Bharat. We sent free vaccines to 70 countries. 70 देशों में कोविड की वैक्सीन हिंदुस्तान ने भेजी मुफ्त में. 70 कंट्रीज. जो जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं ना, विकसित देश जितने हैं, जितने अमीर देश हैं, all their companies refused to send because they said what will happen to our profits, what will happen to our bottom line. हिंदुस्तान एक अकेला देश था जिसने 70 देशों में मुफ्त में कोविड की वैक्सीन भेजी. जब अफगानिस्तान में प्रदीप जी क्राइसिस आया अभी, 50 million tons of wheat was sent to Afghanistan. इसके अलावा जहां पर भी जिसको भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ी है, हिंदुस्तान अग्रसर रहा है उसमें सब देशों की मदद करने के लिए. और अगर हिंदुस्तान की ये नीति, हिंदुस्तान का स्वाभिमान आपको पसंद नहीं है, हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता आपको पसंद नहीं है, और आपने एक वीसा एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग का टाइम 844 दिन लगा दिया मुंबई से, then I would advise, very frankly speaking, the rest of my compatriots, the rest of the Indians, why do you want to go to the US? जाने की जरूरत नहीं है. आप फ्रांस जाइए, रशिया जाइए, जर्मनी जाइए. अरे बहुत अपॉर्चुनिटीज है हर जगह पे. जहां तक अमेरिकनों का सवाल है, अपने आप आएंगे वापस दौड़ते हुए, दुम हिलाते हुए, क्योंकि हिंदुस्तान के बिना किसी भी मुल्क का आज की तारीख में इस धरती पर काम नहीं चलता है. याद रख लीजिए, 844 days प्रदीप जी to process a visa application made in Mumbai, and 2 days, 2 दिन to process a visa application made in Beijing and Islamabad.
अरे भाई, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं पाकिस्तानी, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं बीजिंग, तो उन्हीं के साथ रहिए, ऐसी क्या बात है? हिंदुस्तान की क्या जरूरत है आपको? अगले दिन आप तो झेल ही चुके हैं, झेल चुके हैं ना आप। 2001 11 सितंबर 9/11 जिसको आप बोलते हैं, आप झेल चुके हैं। आगे आपके ऊपर है। हिंदुस्तान आपका दोस्त रहा है, लेकिन स्वाभिमान के साथ। इंडिया हैज बीन द फ्रेंड ऑफ द फ्री वर्ल्ड बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन, वी आर अ फ्री कंट्री। But the Americans have this fascination for all kinds of dictatorships. The Americans have this fascination for problems all around the world. and only for helping those nations who are destroying them. Yes. As the Americans themselves admit, they had to get out of Afghanistan so fast and they were not able to defeat the Taliban only because the Pakistanis sabotaged every one of their moves. And you have just now sanctioned $450 million to the Pakistanis for maintenance and spares of the F-16s. Good for you. All that we can say is all the best to you. As far as India is concerned, India will always work for its own self-interest. Just like the Americans are supposed to work for their own self-interest. But I don't see how you are working for your own self-interest by financing a terrorist nation. एक देश जो आतंकवाद का फाउंटेन हेड है, जहां पर आतंकवाद जहां से पैदा होता है और सारे आतंकवादियों के लिए सेफ हेवन है, आप उसकी अगर मदद कर रहे हैं, यू आर एंडेंजरिंग द लाइफ ऑफ एवरी